फिर थैंक यू सो मच। मैं कभी मैथ्स में अच्छी नहीं रही, इसलिए आईआईटी में आने का कभी ख्वाब नहीं था, लेकिन आज इधर आकर आईआईटी में आने का ख्वाब बिल्कुल पूरा हो गया। This talk series is part of Ministry of Education endeavor, and today I have been given the topic to speak on the gender equality, the Nari Shakti. When we speak of Nari Shakti, this has become a very cliche word today. So much so कि आधे टाइम जैसे ही हम इस वर्ड को बोलना शुरू करते हैं, the mind just switches off. Right? We know generally ये किस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा. But let me tell you, boys and girls, that today's talk is not just going to be a ज्ञान सेशन. ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज के इस सेशन को आपके लिए जेंडर इक्वालिटी पे एक मास्टर क्लास बना सकूं, which is going to give the girls of today a direction, and not only girls, we are also going to have a way forward for the boys, because this generation has to go ahead together, hand in hand. So just be with me. And before I begin, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बहुत अच्छा कहा गया है, बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका, नाम अबला ना दुर्बला, आदि शक्ति अंबिका. This truly summarizes the power that has been there. लेकिन आज जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, we must know where we are coming from. और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी. I'll not take you back to Rigvedas or back to the ancient ages. Contemporary history. 1857 की लड़ाई से भी 85 साल पहले we had a woman warrior, Queen Velu Nachiar. And this Queen Velu Nachiar had her commander-in-chief as a woman called Quili. मैं चाहूंगी कि इस सेशन के बाद आप गूगल करें और Quili, K-U-I-L-I, who was the commander-in-chief of Queen Velu Nachiar, आप पढ़ें उनके बारे में, किस तरीके से वो अकेले बीड़ा उठाती हैं, अंग्रेजों के फोर्ट को जो उन्होंने क्वीन वेलू नेचियार से हड़प लिया था, उसे वापस लाने के लिए, अंग्रेजों के ऊपर एक वार करने के लिए, smeared her body with ghee, lit her body with a diya, and like a burning furnace she walked inside the godown where all the ammunition was kept. Queen Velu Nachiar and Quili. Do Google these. Not now, afterwards. Kittur Rani Chennamma, warrior woman. Begum Hazrat Mahal. Who can forget the Battle of Chinhead? I will term her the warrior queen again. Rani Avantibai. She is often compared to Rani Jhansi. झलकारी बाई. रानी झांसी की कहानी पूरी है ही नहीं जब वो कहती हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. This cannot be complete without झलकारी बाई. क्या आपने कभी माता भाग कौर के बारे में सुना है? 10,000 मुगलों के सामने बैटल ऑफ मुक्तसर में घोड़े के ऊपर सवार माता भाग कौर ने कितने हजारों मुगलों को मारा. Never forget, girls, where your DNA comes from. जब नवरात्रे आते हैं, हम
देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं. माय फेवरेट इज दुर्गा का वो रूप, एंड आई विल कॉल हर द एक्चुअल दबंग गॉडेस. शेर के ऊपर सवार आ रही है, राक्षसों को मारती काटती आ रही है. क्या पावर है उसमें. या देवी सर्वभूतेषु. हर एक शब्द में आपको अपने जेंडर की पहचान नजर आएगी. फीमेल बीइंग, सुप्रीम बीइंग. जब हमारे आजादी की लड़ाई चल रही थी, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी आप सबने सुनी होगी. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. और जब अंग्रेजों ने उन्हें मारा, उनकी मां मूलमती डरी नहीं, आगे आकर खड़ी हुई और बोली, मैं अपना दूसरा बेटा इस देश को देती हूं. गर्ल्स, दैट इज वेयर योर डीएनए कम्स फ्रॉम. आजाद हिंद फौज. आजाद हिंद फौज का नाम सबने सुना है. रानी झांसी रेजिमेंट. सिर्फ यही नाम नहीं दिया, ऐसे ही नाम नहीं दे दिया. सेटल हो जाइए आप लोग. कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट समवन फॉर वाटर प्लीज. थैंक यू. सेटल डाउन, सेटल डाउन. गुड. रानी झांसी रेजिमेंट. आपको पता है कि नाम रानी झांसी रेजिमेंट क्यों रखा गया? किसी अंग्रेज ने एक बार सुभाष चंद्र बोस को कहा था, यदि रानी झांसी जैसी 100 औरतें भी इस देश में हो जाएं, तो अंग्रेज यहां टिक नहीं सकते. एंड दैट इज व्हाई ही रेज्ड दिस बटालियन only for women. He was the first one to make this whole army of women combatants, women warriors. Lieutenant Asha Sahai ने कहा था कि marching through the swamps and sweltering jungles with several kilos of military gear, ammunition, fighting fit and feastly singing, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, they gave deadly blows to the Britishers. क्या आप में से कभी किसी ने सरस्वती राजमणि की कहानी सुनी है? मात्र 15 साल की ये लड़की सुभाष चंद्र बोस की सेना के लिए स्पाई का काम कर रही थी. अंग्रेजों के कैंप्स के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन लेकर आना, और जब पकड़े गए तो पीछे से अंग्रेजों ने उन्हें गोली भी मारी, रुकी नहीं. बहता रहा खून, रुकी नहीं. She gave all the information to our own army. Girls, that is where your DNA comes from. नूर इनायत अली खान, सहमत खान, जिनके ऊपर राजी पिक्चर बनी, कितने नाम लूं मैं. आजादी की लड़ाई औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, जब हमने अपना जलवा दिखाया, हमने अपनी हिम्मत दिखाई. राजी पिक्चर कितनों ने देखी है? क्या आपको पता है सहमत खान ने जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करी, that saved our Indian naval ship Virat from being hit by Pakistan naval submarine Ghazi. बहुत बड़े बड़े काम किए आपके जेंडर ने. डरना नहीं कभी, भूलना नहीं कभी. आज जेंडर इक्वालिटी की बात शायद हमें करनी ही नहीं चाहिए थी. Over a period of time, especially after we got independence, somewhere the martial character, the warrior character of women got subdued. Why is it that we did not have girls in army after we got independence?
I have no answer to that. 1993, when the first batch of women officers passed out from Officers Training Academy, a page turned over in the history. We were again wearing uniforms. Army, Navy, Air Force. Before this, we have seen CRPF. We have seen women in BSF. We have seen women being posted to Nastachun Pass and Sri Lanka. कितनों ने गुंजन सक्सेना मूवी देखी है? Good. Gunjan Saxena was a daredevil pilot whose primary work was casualty evacuation during Battle of Kargil. How many of you have heard about squadron leader Minty Agarwal? Very good, but very few hands. अच्छा, अभिनंदन वर्तमान का नाम कितनों ने सुना है? क्या आपको पता है अभिनंदन वर्तमान की कहानी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की कहानी के बिना अधूरी है? She was the fighter controller for not just Abhinandan Vartman, but for many planes that were on the air that night. Operation Balakot. She was the eyes and ears of all those fighter pilots. She was telling them, looking at the whole radar. She had the whole scene in front of her. कहां से पाकिस्तानी जहाज आ रहे हैं, कहां से हमारे अपने जहाज हैं, कौन सा जहाज कितने पास से निकल रहा है, whether to arm the missile or not, and if yes, which missile to be armed. And finally, she would give the choice of weapon to the pilot. And the pilot's role was just to lock, press the red button, and boom. So next time, when you hear the story of Abhinandan Vartman, do not forget squad leader Minty Agarwal. I am telling you all these things so you know that your DNA comes from warrior women. We have got 3 generals, women generals from Indian Army, and all 3 of them are from Medical Corps. I am waiting for a day, and God give me a life long enough to have my vision come true. I have a vision to one day see a whole squadron of Bhishma tanks being commanded and powered by women. I have a dream that one whole post of Siachen Glacier is being looked after by women soldiers and women officers. I have a dream that one day Brahmos and Pinakas are being guided by the women artillery officers and creating a fear in the hearts of the enemy. I have a dream that not only Shivani, but a whole generation of fighter pilots flies the Rafale squadron. I have a dream to see one day that the nuclear submarine of Indian Navy is being commanded by a woman naval officer. And that day is not far. That day is not far. But today when we speak of gender equality, when we speak of women, we must also think